स्पाइन इंडोस्कोपी एवं सर्जरी विषय पर आयोजित इंडोस्पाइन 2025 लखनऊ थर्ड जनरेशन में डॉक्टर अचल को देख रहा हूँ। Thanks to Achal, I think things are changing fast in Lucknow. स्पाइन सर्जरी बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। डॉक्टर अचल गुप्ता जी, जो कि इस विधा को धारा के विपरीत बह करके आप आगे लेकर के आए। अद्भुत आपका सराहनीय योगदान है। We have started the endoscopic program in RML Institute of Medical Sciences way back, but we are into tubular and Desjardins type of endoscopic things, techniques also, and the pain procedures and the pain clinics everywhere is running smoothly. महात्मा गांधी जी का एक सेंटेंस है, यू हैव टू बिकम द चेंज विच यू वांट। आपको उस बदलाव को खुद अपने अंदर लेकर के आना है, उस बदलाव को खुद बनना है जिस बदलाव को आप दुनिया में चाहते हैं। तो उसके एक जीवंत एग्जाम्पल मैं डॉक्टर अचल को देख रहा हूँ, एक यंग जनरेशन में, थर्ड जनरेशन एंडोस्कोपिक स्पाइन सर्जन में। मैं देख रहा हूँ कि अचल पिछले कुछ सालों से लगातार इस कॉन्फ्रेंस को ना केवल कर रहे हैं बल्कि वो लोगों को प्रोत्साहित भी कर रहे हैं कि छोटी छोटी जगहों पे भी इन एंडोस्कोपिक टेक्निक्स को लोगों ने अपना लिया है और वो बहुत अच्छे तरीके से इन्फेक्ट कर रहे हैं। मैं आपको बहुत बहुत बधाइयां देता हूं। थैंक यू। मैं इस चीज के लिए पूरा श्रेय सही मायनों में और दिल से मैं अचल को देना चाहता हूं। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत धन्यवाद। Now I request to have a video message from Professor Dr. P.S. Ramani, Mumbai, the father of Indian spine surgery. It is my great pleasure to be associated with this endoscopic conference being organized by Dr. Achal Gupta and his associate in Lucknow. I wish the conference that Dr. Achal Gupta has organized in Lucknow a big success. Thank you very much. Now it's an honor to introduce a special video message from Dr. Kantek Lim, a pioneer in field of endoscopic spine surgery. Hello everyone, and Professor Dr. Ramani and Professor Dr. Hussain and my friend, congratulations on the endoscopic spine meeting. So please work hard to run because it's your the future. Thank you. See you again.